क्या आपको पता है कि कई सिविल इंजीनियर्स सिर्फ 5 मिनट के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं? और सबसे बड़ी हैरानी की बात, उनमें से कई लोगों के पास डिग्री भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर उन्होंने कभी प्रिपेयर ही नहीं किए। एक गलत आंसर और आपकी 4 लाख, 8 लाख या 15 लाख पर ईयर की सैलरी आपके हाथ से निकल जाती है। सोचिए, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अगर इंटरव्यू में सिर्फ 20 मिनट की तैयारी की कमी आपकी पूरी करियर ग्रोथ रोक दे, तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? लेकिन अच्छी खबर यह है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिविल इंजीनियर्स के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके प्रोफेशनल आंसर्स और इंटरव्यूअर आखिर में आंसर में क्या चाहता है। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं या गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये लगभग हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है। गलती क्या होती है? कैंडिडेट अपना पूरा बायोग्राफी सुनाना शुरू कर देता है। सही तरीका क्या है? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज विक्रम. I have completed my BE or BTech in Civil Engineering from XYZ College. During my academics, I developed strong knowledge in RCC design, estimation, surveying, AutoCAD, and construction management. I also completed internships where I worked on site supervision, quantity estimation, and quality control. I enjoy solving construction problems and learning practical site execution. I am looking for an opportunity where I can contribute and continuously learn. यही प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन 2, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ सैलरी के लिए आए हैं या करियर के लिए। प्रोफेशनल आंसर, आई नो योर कंपनी इज वर्किंग ऑन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. आई बिलीव वर्किंग हेयर will help me improve my technical knowledge as well as project management skills. Question 3, what are your strengths? Possible answers: problem solving, teamwork, site execution, time management, fast learning. Example: my biggest strength is handling site problems calmly. Question 4, what is your weakness? गलती, I have no weakness. सही आंसर, earlier I hesitated while speaking in meetings. I have been improving it by participating in technical discussions. Question 5, difference between cement and concrete. Expected answer: cement is a building material. Concrete is a mixture of cement, sand, aggregate, and water. Question 6, what is RCC? RCC means reinforced cement concrete. Concrete is strong in compression. Steel is strong in tension. Together they form RCC. Question 7, what is PCC? Plain cement concrete. No reinforcement. Used below foundations. Question 8, what is grade of concrete? Example: M20, M25, M30. The number indicates characteristic compressive strength after 28 days. Question 9, what is slump test? Purpose: to check workability of fresh concrete. Question 10, why is curing important? Without curing, concrete develops cracks, strength decreases, durability reduces. Question 11, what is water cement ratio? Lower ratio gives higher strength, but too little water reduces workability. Question 12, what is cover block? Provides protection to reinforcement against corrosion and fire. Question 13, what is development length? Length required to transfer stress safely between steel and concrete. Question 14,
Difference between one-way slab and two-way slab. Explain with span ratio. Question 15. What is footing? Transfers building load safely to soil. Types: isolated, combined raft, and pile. Question 16. Difference between column and beam. Column transfers vertical loads, beam transfers slab loads to columns. Question 17. What is shear force? Internal force acting parallel to cross section. Question 18. What is bending moment? Moment produced due to external load. Question 19. What is BOQ? Bill of quantities. Contains item-wise quantities. Used for tendering, billing, cost estimation. Question 20. What is bar bending schedule? Detailed reinforcement schedule. Question 21. Which software do you know? AutoCAD, StatPro, eTabs, Primavera, MS Project, Excel. Mention honestly. Question 22. Explain estimation. Calculation of quantities and project cost before construction. Question 23. What is quantity surveying? Measurement of work executed. Question 24. What is rate analysis? Calculation of actual cost including material, labor, machinery, overheads, profit. Question 25. What are tender documents? NIT, BOQ, specifications, drawings, journal conditions, special conditions. Question 26. Difference between dead load and live load. Dead load, permanent. Live load, movable. Question 27. What is soil bearing capacity? Maximum load soil can safely carry. Question 28. What is compaction? Increasing soil density, removing air voids. Question 29. How will you handle labor issues? Stay calm, understand issue, talk respectfully, inform senior if required, never lose control. Question 30. How will you manage delay in project? Identify reason, prepare recovery plan, increase manpower if required, track progress daily. Question 31. How do you ensure quality? Material inspection, cube test, slump test, proper curing, site supervision, documentation. Question 32. How do you ensure safety? PPE, helmet, safety shoes, barricading, toolbox stock, daily inspection. Question 33. What if contractor uses poor quality material? Stop work, report, replace material, never compromise quality. Question 34. What are IS codes? Explain the importance. Mention examples like IS 456, IS 875 if known. Question 35. Describe your final year project. Always explain objective, method, result, learning. Question 36. Why should we hire you? Sir, I am technically sound. I learn quickly. I can work on site under pressure. I am committed to delivering quality work. Question 37. Where do you see yourself in 5 years? As a technical expert, project engineer, site manager, project manager. Question 38. Do you have any questions for us? Always ask. Like, what kind of projects will I be working on? What training programs are available? What are the growth opportunities? Common HR rapid fire. Can you relocate? Can you work under pressure? Can you work on remote sites? Can you work on weekends? Expected salary? Notice period. Biggest mistakes की बात करते हैं, like memorized answers, poor communication, negative attitude, lack of confidence,
no company research, lying about software knowledge, no eye contact, poor grooming. Now, secret tip: interviewers don't expect you to know everything. They expect you to be honest, professional, confident, ready to learn. यही तीन बातें आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाती हैं। याद रखिए, इंटरव्यू नॉलेज का नहीं, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन का भी टेस्ट होता है। एक अच्छा सिविल इंजीनियर केवल ड्राइंग्स नहीं पढ़ता, बल्कि सही डिसीजन लेना भी जानता है। अगर आपने आज बताए गए सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आपका अगला इंटरव्यू पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताइए, आपका सबसे कटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सा रहा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसे अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे सिविल इंजीनियर मॉक इंटरव्यू, लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।